Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with the remaining part of negotiable instrument. काली जे आमे देखिथिलो कोन ना promissory note and bill of exchange रो किछि introductory part. अच्छा first of all आमे जेति कि textbook रे अछि textbook रे आमे filter out करिया exam oriented things and next negotiable instrument रे जतलो last class टी हबो सेतलो को तुमको separately को हबो कि कोन केमति पढिबो कहि हैला. So any confusions you can let me know. Bill of exchange देखो. Section 5 defines the expression bill of exchange as an instrument in writing containing an unconditional order. What do you mean by unconditional order? Kali hame dekhithilu. Unconditional order mane this is an order but there is no underlying condition associated with it. Signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. There is a quite similarity between promissory note and bill of exchange. Bujhila? Promissory note ro main point am kon koithili one particular party promises the other particular party that they pay a certain sum of money at a certain time period. Hela sethe interest be mention heithibo sabu kiछि point sethe thibo. Bill of exchange रे से कोन कहउची डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन. बिल ऑफ एक्सचेंज डायरेक्ट करची गुटे सर्टेन पर्सन को पेमेंट करिया पई बुझला से पर्सन को डायरेक्टली से पेमेंट करि परियो नले कोन करे न तार बियरर को भी पेमेंट करे हैला. तो ए सर्टेन पर्सन जहां भी अछि दिस मे और मे नॉट बी द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. दिस इज द की हाईलाइट पॉइंट हियर. तो हैशटैग करके लिखो सर्टेन पर्सन may or may not be the bearer of the instrument. Certain person may or may not be the bearer of the instrument. हैला से बियरर अगर निजे निजे पे कहि परियो किबा आ को पर्सन को डायरेक्ट करिकि भी कहि परियो. एग्जांपल देखो a promise or order to pay is not conditional within the meaning of this section and section 4 by reason of the time for payment of the amount of any installment thereof being expressed to be on the lapse of a certain period after the occurrence of a specified event which according to the ordinary expectation of mankind is certain to happen although the time of its happening may be uncertain. तो से कौन कहउची जदी टाइम पीरियड स्पेसिफाई हेची they'll pay within the specified time. जदी ऑर्डिनरी टाइम पीरियड कहउची रीजनेबल टाइम पीरियड कहउची तो तमे बुझिबा कथा कि सेटा 3 मंथ्स की 4 मंथ्स की 5 मंथ्स हबर अछि. अच्छा अगेन द रीजनेबल टाइम पीरियड जहां भी जदी कहउची तो 5-6,000 जदी के उधार नउची तो सेटा पे आमे रीजनेबल टाइम 1 ईयर कहि परियनी नाही दैट मे बी 1 मंथ की 2 मंथ जहां भी मैक्सिमम पीरियड हे परियो. जदी 1 लाख नेची तो मे बी वी कैन टेक 1 ईयर बुझला. तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट से रीजनेबल टाइम पीरियड टा चेंज हबो हमर बुझि पाला. तापर देखो द सम पेएबल मे बी सर्टेन. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड सर्टेन माने सर्टेनिटी थिबार अछि कि केते अमाउंट ऑफ मनी सहित हम डील करछु विद इन दिस बिल ऑफ एक्सचेंज within the meaning of this section and section 4 although it includes future interest. Please underline it includes future interest. It includes future interest. मु कहिथिली से जे पर्टिकुलर अमाउंट अछि से अमाउंट भितर से परसेंटेज मेंशन करबोनी से सब बळे कोन मेंशन करबोन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट हियर. पिलाने कंफ्यूज ही जानती तो मनरे एटा गुटे बिल ऑफ एक्सचेंज तो बिल ऑफ एक्सचेंज रे कोन होची जे सम अछि जदी एटा होची 1 लाख जदी एटा होची 1 लाख आमे जानछु आ ऊपर से केते पैसा पचाछि 20,000 रुपीस एज इंटरेस्ट पचाछि. तो बिल ऑफ एक्सचेंज जहां भी ड्रॉ हबो सेटा हबो हम पई 1,20,000 रो क्लियर. 1,20,000 रुपीस रो इंटरेस्ट माने सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज ता हम कोन ड्रॉ हबो डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द थिंग काहेकि से कोन एक 3% की 2% की 5% इंटरेस्ट कह कि से कोन कहउची ना टोटल अमाउंट मिसै गिर से गुटे बिल ऑफ एक्सचेंज ता ड्रॉ कर दउची. तो से सेडा कहउची हैला ए सर्टेनिटी पॉइंट ता आ सहित एसोसिएट करियो क्लियर. तो एडा गोटे क्वेश्चन थिला जोथरे कि से पचाथला इंटरेस्ट रेट जहां भी अछि सेडा परसेंटेज हिसाब रे थाउनी बिल ऑफ एक्सचेंज रे इट्स ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट. बहुत भल से मन रखियो.
is payable at an indicated rate of exchange or is according to the course of exchange, and although the instrument provides that on default of payment of an installment the balance unpaid shall become due. ହେଲା जदि किछि भी पोर्शन पेमेंट होनी माने से कहयनी कि टिके जदि पेमेंट कर देला तो सेटा डिफॉल्ट हबनी कहि हम भाबी पारियन 1,20,000 रे से 1,15,000 बांधले भी he will be considered defaulted only. से कौन कहूची द एंटायर अमाउंट जते जे पेमेंट हबनी सेते जे सेटा कोन डिफॉल्ट वाले हमें कंसीडर करबो. The person to whom it is clear that the direction is given or that the payment is to be made may be a certain person within the meaning of this section and section 4, although he is misnamed or designated by description only. Misnamed or designated by description only. से कौन कहूँ देखो the person to whom it is clear that the direction is given जागो भी direction हमें दोचु or that the payment is to be made to a certain person जदि से कहि दोछि किछि certain person को payment करियार अछि within the meaning of this section रो meaning भितर जदि से कहछि although he is misnamed or designated by description only माने से कहछि देखो certain person को जदि से indicate कर दोछि तो इमिति कहयानी कि से person रो designation टा तमे भूल लिखिछो name टा भूल लिखिछो तो मु ए जिंस को धरी confusion create करबी कहि कि तमे कहि पारियनी काहेकि you are indicating a certain person. बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ माने होची बुझो टिके लोकान भीतर डिस्कशन ही था कि तो से पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करिवो आई विल बी द मिडल मैन हियर एक्सेप्टर हो जहां भी पे से थिबो कि ड्रॉयर तो थिबो तो एमिति सब जिंस डिस्कस हेथिबो तो जतो डिस्कस हेथिबो पर्सन दा आइडेंटिफाई हेथिबो तो आमे कहि परियानी कि से पर्सन रो नेम दा मिसप्रोनाउंस हेछि से पर्सन रो डेजिग्नेशन दा भूल रखिछु तो ता लागि पेमेंट करि परिनी कि पेमेंट रिसीव करि परिनी कहिगे तो डेजिग्नेशन और नेम भूल रहिले किछि भी फरक पड़नी. क्लियर बुझि पाला पॉइंट ता. Then देखो the Calcutta High Court in Sinha versus Bindu Bhushan DAR narrated the essential character of a bill of exchange. Again देखो High Court रो जहाँ भी decision था उची काले हमें लिखिथिलो promissory note रो तो bill of exchange पई High Court's elements कौन कौन अच्छे हमारा which is that it contains an order to accept or pay. First point कौन कहछि से order to accept or pay. An order to accept or pay and that the acceptor should accept it. Acceptor should accept it. जे भी acceptor अच्छी से ना accept करियार अछि. In the absence of such a direction to pay, the document will not be a bill of exchange or a कौन कहछि से हुंडी. हुंडी होछि न्यू पॉइंट एडी. तो in the absence of direction to pay, the document will not be a bill of exchange. हला तो दीडा का जिंस से कहिछि. First point कौन हमरो an order to accept or pay. An order to accept or pay. Acceptor should accept. से खाली ऑर्डर करले कोन हो से पर्सन एक्सेप्ट भी तो करियर अछि ना सो एक्सेप्टर शुड एक्सेप्ट इट. एक्सेप्टर शुड एक्सेप्ट इट. बुझी पाला. फर्स्ट पॉइंट कोन कहछि से एलिमेंट इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट और पे से एडी पर्सन्स रो जिंस जा मेंशन करनी. अच्छा काली जेतुला हम देखिथिलो प्रॉमिसरी नोट रे से कोन कहिथिला हमको हाई कोर्ट रो एलिमेंट गुडा को केतरा कहिथिला से चारटा एलिमेंट कहिथिला हमको सेथरे से कहिथिला अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे certain sum of money, order of a person or bearer of the instrument, mandatory signature of the maker. अच्छा ए सबुजा पॉइंट हमको बिल ऑफ एक्सचेंज रे अछि ना नै सबुजा पॉइंट हमको अछि ना नै अछि बट डिफरेंस कोन देखो तुमको से कैरेक्टरिस्टिक्स जदी पचारिबो तमे सबुजा लिखि पारियो बट एलिमेंट्स जदी पचारछि स्पेशली से हाई कोर्ट रो एलिमेंट जतरो पचारछि सेतरो कोन तमे जेति के हाई कोर्ट मेंशन करछि से जा लिखियार अछि तमे आउथरे से जा रिपीट करि पारियो. बुझिला ना एबे कोन पे हाई कोर्ट एलिमेंट अलग रे लिखेली मु बुझि पालो ना. तो हाई कोर्ट रो एलिमेंट रे एडी कोन कहिछि से बिल ऑफ एक्सचेंज रे काई से को गांव पड़ेला गांव जाइने. In order to accept or pay, acceptor should accept. Clear? ए दीडा का एलिमेंट से मेंशन करछि.
Now see types of bill of exchange से कोई देखो bankers draft, a demand draft even if it is to be drawn upon another office of the same bank, an order issued by the district board engineer on government treasury for payment to or the order of a certain person. So these are the types of bill of exchange recognized by the High Court. Bill of exchange ଆମେ ପିଲା ବେଳୁ ପଢି ପଢି ଆସୁଛୁ କେତେ ଯା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପଢୁଛୁ बट आमको सीएमए पर्सपेक्टिव रो कोन रेलेवेंट ना फर्स्ट थिंग होची हाई कोर्ट कोन स्पेसिफाई करची हाई कोर्ट केमिति टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करची हाई कोर्ट तीन प्रकार बिल ऑफ एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करची द फर्स्ट पॉइंट इज अ बैंकर्स ड्राफ्ट माने कोन इट्स अ मियर बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली जहां भी बिल ऑफ एक्सचेंज हमें पढिचो आज जे सब जा कोन बैंकर्स ड्राफ्ट अंडर रे पढाइसो सेकंड पॉइंट होची अ डिमांड ड्राफ्ट इवन इफ इट इज टू बी ड्रॉन अपॉन अनदर ऑफिस ऑफ द सेम बैंक बुझी पारछ ना माने ब्रांच ता अलग नथबो ब्रांच सेम थिबो ब्रांच भीतर भीतर जेतळको बैंक ट्रांजैक्शन होची आ सरे डिमांड ड्राफ्ट थ्रू रे होची सेडा भी गुटे टाइप ऑफ कोन बिल ऑफ एक्सचेंज बुझी पाला ना डिमांड ड्राफ्ट जोडा की गुटे सेम ब्रांच रो डिफरेंट ऑफिसेस सेम ब्रांच रो डिफरेंट ऑफिसेस मजरे जेतळो गुटे ड्राफ्ट ता सेंड होची कि रिसीव होची सेडा भी गुटे प्रकार कोन बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर an order issued by a district board engineer on government treasury district board engineer जे भी अछि जे भी responsible अछि money fund flow पई से कोन ऑर्डर करछि गुटे गवर्नमेंट ट्रेजरी माने कोन रे पैसा जोडी रखा हेतिबो द सम ऑफ मनी एक्युमुलेटेड से मनीटा केमिति डिस्ट्रीब्यूट होबो केमिति एपोर्शन होबो से जिंसडा जेतळको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंजीनियर जेतळको ऑर्डर करूछि फॉर पेमेंट टू कोन पे ऑर्डर करछि ना फॉर पेमेंट टू इधर पेमेंट करिया पे or order of a certain person either से directly payment करिया पहुची नले पहुची कोन से पर्टिकुलर पर्सन को तमे दियो से किन सेटा डिस्ट्रीब्यूट करिवो जदी कोटे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंजीनियर एडा सबटो इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंजीनियर जे भी अछि से गवर्नमेंट ट्रेजरी को ऑर्डर करछि डायरेक्टली पेमेंट करिया पे एल्स कोन पेमेंट न करले भी तमे से पर्सन को दियो जे भी रिस्पांसिबल पर्सन अछि ही विल डिस्ट्रीब्यूट द पर्टिकुलर अमाउंट कहि कि क्लियर एडा होछि जिंसो बुझि पालो बिल ऑफ एक्सचेंज एतिकी अछि हमको रेलेवेंट पार्ट एनी डाउट्स हियर नहीं चेक देखो देन चेक होची गुटे बहुत भलो जिंस चेक रो वर्ड सुने कि हमको बहुत खुशी लागे हैला हमो दबा कहले खुशी लागियोनी बट चेक नबो कि चेक नबो कि कहले बहुत खुशी लागे until and unless a person ro bank balance fine the term check is defined under section 6 of the act. It is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. Second coach it's a bill of exchange. Check coach kon check is a type of bill of exchange. अच्छा तमे काली पढथिबो गुटे पॉइंट ता कि हमको तीन प्रकार बिल ऑफ एक्सचेंज अछि कोन अछि प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज सॉरी तीन प्रकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अछि प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक बट से कोन कोची चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज तो तमे एडी क्लियर कट डिफरेंस देखि पारथियो बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट इज अ मियर स्टेटमेंट जोडा कि खाली साइन हेथियो कि आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मु कहितली लीगल ऑब्लिगेशन पर क्रिएट होबो बट बिल ऑफ एक्सचेंज रे कोन इट्स एन ऑर्डर हला आगुडा का सेटा गोटे पावरफुल स्टेटमेंट किंबा डॉक्यूमेंट क्लियर द चेक इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट इट्स अ bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form तो से कोन होची जदी सेतलो गोटे चेक माने हमें डायरेक्टली दोचु सेडा भी वैलिड चलछि जदी हमें से चेक को स्पीड पोस्ट रे किबा का हाथ रे पठौछु सेते जे हमें ताको गोटे ट्रंकेटेड इमेज माने गोटे डॉक्यूमेंटेड इमेज होछु इवन दैट इज एज पावरफुल एज द ओरिजिनल चेक हैला तो चेक रो आइडेंटिटी जहां भी अछि सेडा कोन फिजिकल एस्पेक्ट लागि केबे भी चेंज हे जायनी बुझी पाला देयर आर थ्री पार्टीज इन अ चेक भीतर कितना पार्टी थाउछनी तीनटा पार्टी ड्रॉयर ड्रॉई पे clear in such cases drawee is always the bank which has been instructed by the drawer से कौन कुछ देखो सबोडे ड्रॉई के हेतिबो चेक कौन हेतिला चेक रो पॉइंट्स हमरो type of bill of exchange which is
as valid as it is, which is as valid as it is in physical, in physical, electronic, in physical, electronic and physical, electronic and truncated formats. Physical, electronic and truncated formats. Truncated formats. तीनटा जा फॉर्मेट रे सेटा कोन वैलिड एंड पावरफुल बुझी पाछो बुझिला तो ए भितरे हमें देखिलो कोन हम केतरा पार्टीज थाउचंदी ना 3 पार्टीज ड्रॉयर क्लियर ड्रॉ इज ऑलवेज चेक रो केस रे हमको बुझिया दरकार नै ऑलवेज के थाउची ऑलवेज बैंक कार बैंक कोन ड्रॉई होची बैंक तो कार बैंक सेटा थिबो वेरी गुड ड्रॉयर रो बैंक थिबो पेई रो बैंक से दबोनी बुझी पाला ना इट्स ऑलवेज द बैंक ऑफ द ड्रॉयर इमती क्वेश्चन आगा पचारि बसे कंफ्यूज करियो सी तार अकाउंट जोथरे अछि सेडा रो चेक दबो ना बुझी पाला ना the drawer is the person who is paying person who is person who is paying pay माने person who is receiving pay कौन कहियो तो देई कहिथिलु पुरा the person who is paying sorry receiving who is receiving कोन चेक मिलिबो कि तमो In such cases, the drawer is always the bank which has been instructed by the drawer. Please underline the word instructed by the drawer. Drawer instruct करथिबो इमदी नै कि तार आगा अकाउंट रहिथियो कि आउ कार चेक आने से दोथियो कि जहा भी हे परियो तो instructed by the drawer. Always the bank मोडी instructed लिखि दोची ना तमे खाली इन दी स्टार मार्क करी कि instructed लिखि दियो आ किछ दरकार instructed by drawer कौन पई एलिमेंट आगरे कहि दो चले कहले मु भी मन ने गाली करथि जेतलो को किछि YouTube लेक्चर वगैरह देखुथिबी दे दो माने से लोक ने कोन करंती आराम से ताके लिखै कि आराम से लिखि दियंती तो आमे कोन आमे लिखि देथिबो हम गंधिया करियो इच्छा नै तो बडरा लगियो बुझला हम इजी पे आगा से लिखिबो बट स्टिल हम टी राग लगियो तो सेते में कहि दोछ एंड अनफॉर्चूनेटली मते स्टूडेंट मानकर वॉइस बहुत जल्दी सुबि जियो काहे गेले बेसी दिन ही नि बस यार रेडी आसी क्लियर So, through the check to make the payment to the holder of the instrument, which is the payee. Holder of the instrument is always the payee. Holder of check. Holder of check. से predominantly कहि दैछि कि payee होछि holder of the check. अच्छा चेक रो अदर नेम कौन डिफाइन करछि हम एक्ट का ट्रंकेटेड चेक चेक इज also known as truncated check is also known as truncated check को एक्ट स्पेसिफाई करछि एटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खरा मोबाइल फोन अच्छे जदी टिके रखो देन देखो
A check in electronic form is a check drawn in electronic form by using any computer resource and signed in a secure system. Please underline electronic form माने कौन computer resource को धरिकी हेतिबो और सेटा sign हेतिबो secure system रे with digital signature से मैंडेटरी कहनी कि सेटा बायोमेट्रिक सिग्नेचर टा हेतिबो कहगे mandatorily सेटा कहनी and asymmetric crypto system or with electronic signature as the case may be तो हमको लेखिया दरकार कोन चेक रो अदर नेम एडी मु लेखि दउचे अदर नेम कोन कहथिली ट्रंकेटेड चेक हैला मन रखिबो एडा तुमको पचारि को डिफाइन ट्रंकेटेड चेक अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो यू विल राइट द सेम थिंग चेक जहां भी ट्रंकेटेड चेक सेडा अदर नेम इज ट्रंकेटेड चेक क्लियर से कछि इलेक्ट्रॉनिक चेक इलेक्ट्रॉनिक चेक रे से कोन कहछि देखो फर्स्ट थिंग से कहछि ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स इमति ना कि हमें फोन रे किछि स्कैन करके फोन रे किछि बने के हमें कर देथिबो दैट मस्ट बी फर्स्ट पॉइंट से कोन कहछि चेक ड्रॉन from a computer resource check drawn from a computer resource clear and se kon कहछि digital signature with or without digital signature with or without biometric माने बुझছো फिंगरप्रिंट but we still have some माने particular companies जोड़ा कि हमको चेक सहित they need your digital fingerprint as बुझी पाला ना बायोमेट्रिक सिग्नेचर टा से मैंडेटरी करिके रखिछन बिकॉज़ बायोमेट्रिक सिग्नेचर जो स्कैन होजी इट विल बी इजी फॉर अ पर्सन टू डिटेक्ट एनी फ्रॉड्स बुझी पालो तो बायोमेट्रिक सिग्नेचर टा सेते पई बहुत इंपोर्टेंट तो फर्स्ट पॉइंट कहली कंप्यूटर रिसोर्स सेकंड पॉइंट कहली डिजिटल सिग्नेचर विथ और विदाउट अ फिंगरप्रिंट थर्ड पॉइंट से कोन कहछ देखो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम प्लीज अंडरलाइन एसिमेट्रिक write down asymmetric crypto system तो एडार मेजर मीनिंग होची पर्टिकुलर थिंग जोडा कि गुटे लोगो टाइप रो जोडा गुटे कंपनी स्पेसिफाई करथे कि तमे बाध्य होई कि से पर्टिकुलर सिंबल ला सेथिरे रखिबार अछि एडा बहुत अनकॉमन जिंस बिकॉज़ बैंक्स जनरली हैव दे माने पर्टिकुलर लोगो तांको गुटे लोगो थाउछ तो आमे जतो कंपनी रो लोगो सेठी एसोसिएट करी सेटा ही पारिन सो दिस इज समवॉट सिमिलर टू द कॉमन सील जहां भी थाउछ ना कंपनी मानंगर एडा टिके सिमिलर जदि कंपनी बिहाफ रे किछि तमे इश्यू करछ चेक हिसाब रे तो कोन कॉमन सील ना हमें सेडी नै पारे बट दिस सिस्टम इज नॉट माने एबे प्रेवलेंट नाइ से जिंसडा आगरे होथिला दिस इज एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होची सबट बेस्ट जिंस पिलानो साना पिलानो जतो होथियो तांगर एक्सप्रेशन टाइम सीन दिया होतो इलेक्ट्रॉनिक signatures okay एडा होची चेक बुझलो हैला ना में देन देखो तापर से कुछ ट्रंकेटेड चेक फिसरे किछि A truncated check is a check which is truncated during the course of clearing cycle either by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving payment immediately on generation of an electronic image for the transmission substituting the further physical movement of the check in writing. So this is the meaning of a truncated check actually. Second coach is a check which is truncated.
अगेन से कंपनी लॉ या गोटे डेफिनेशन टा दोची ट्रंकेटेड माने कोन से कहउछ देखो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ क्लियरिंग साइकिल जेतलो को क्लियरिंग साइकिल रो पीरियड टा पळा आसिला क्लियरिंग साइकिल माने कोन आमे जानथिबु चेक जेतलो हम इश्यू करछु क्लियर करिया पई इट विल टेक 2 to 3 वर्किंग डेज 2 to 3 वर्किंग डेज से नबो either by the clearing house जदि clearing house जणो को हम देछ माने एमिति गुटे लाइक एजेंसीज थाउ छथि जे कि देखो जे बुढ़ा लोक माने पाखरे चेक थाउची कि इलिटरेट पीपल पाखरे जदि चेक थाउची दिस क्लियरिंग हाउसेस व्हाट दे डू इज तांके से मानरो चेक टा रिसीव करके दे हेल्प दीस पीपल क्लियर द चेक तांके तांको हिसाब रे जाईगरी चेक टा टिके क्लियर करिया पे तांको हेल्प कर तो एदर से चेक टा क्लियरिंग हाउस पाखरे थिलाळगु किंबा कोन बैंक पाखरे थिलाळगु whether paying or receiving the payment paying stage रे थाउ कि receiving stage रे थाउ immediately on generation of an electronic image गोटे इलेक्ट्रॉनिक इमेज जेतरो को जनरेट हेइथिबो माने एना कोन जानछ ना चेक क्लियरेंस प्रोसीजर टा एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज वंस जेतरो जनरेट हेइजिबो फॉर ट्रांसमिशन कोन पे पठेबा पे substituting the further physical movement of the check in writing तो ट्रंकेटेड रो मीनिंग कोन जेतरो हम क्लियरिंग स्टेज को आनी देलो ध्यान से सुनो तो क्लियरिंग स्टेज को पळा आसला गोटे चेकटा पळा आसला पर जेतरो पेमेंट स्टेज रे थाओ रिसीविंग स्टेज रे थाओ वंस जेतरो को द इनिशिएशन स्टार्ट हे गला तो फर्दर ता ऊपर किछि चेंजेस हेई परिबन जेते जे इनिशिएशन स्टार्ट हेनी ता ऊपर किछि चेंजेस हेई पारथांदा बट एबे किछि भी चेंजेस हेई परिबनी तो फर्दर फिजिकल मूवमेंट जेतरो हेई परिबनी तो ट्रंकेटेड रो मीनिंग होचे आमे तार इलेक्ट्रॉनिक इमेज टा डेवलप करिकि रखि देबा हेगिरी तापर जहां भी इनिशिएशन प्रोसेस टा कैरी आउट करि रछि सेडा हमें करबो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ट्रंकेटेड जोडा कि से कंफ्यूज करिकि देछि प्लीज राइट डाउन सिंपलर फॉर्म रो एडी आगे एरो मार्क करिकि लिखि दियो ट्रंकेटेड चेक रो मीनिंग होछि ट्रंकेटेड माने truncated ro meaning according to the act mo कहउछि एबे हला फर्स्ट according to the act लेखो truncated means once the check has entered the clearance phase once the check has entered the clearance phase whether receiving or paying then the further initiation is carried out using the electronic image of the check only बुझला एडा होची act specified meaning of the truncated बुझि पाला I hope it's clear तार कोन डाउट अछि एथरे नाही देखो से कहछि the expression clearing house is the house managed by the RBI or a clearing house recognized as such by the RBI तो आरा मीनिंग कोन क्लियरिंग हाउस जे भी एस्टैब्लिश करिके रखिछि ना कि मो हेल्प करबी तमरो चेक क्लियर करिया पे से कोन नॉर्मल लोक कोन एस्टैब्लिश करथेली नै आरबीआई रे ता ऊपर किछि सुपरविजन पबो तो ए पॉइंट रा हम क्लियर होछि क्लियरिंग हाउस इज सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई माने से कोन कहछ देखो इधर से बागर ठीक है बा आगरे आरबीआई को कहि दिछि किबा ठीक हैला पर आरबीआई को कहछ तो इधर सेडा मैनेज हेतिबो आरबीआई लागि करथियो आरबीआई हैला तो माने अल्टीमेटली से कोन कहउची क्लियरिंग हाउसेस आर सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई क्लियर डिस्टिंक्शन देखो प्रॉमिसरी नोट एंड चेक भितरे एटा देखो मेयर एडे लेखो मेकर मेयर
अगेन एडी गोटे पॉइंट से मिस कर देला देखिना ना promissory note starts with P, check starts with C. आज ले से कहीं it is defined in section 4, it's defined in section 6. A promissory note रे के था होचनी maker and payee, but एतरे drawer, drawee and payee. Promissory note contains a promise to pay the sum with interest or without interest at a later date. बुझी पाला तो से कौन कहूची it contains a promise to pay along with कौन interest or without interest. इमती नहीं कि promissory note रे we are bound to pay the interest, the summation which is promised सेतरे interest amount add ହେଇथियो कहगे, but it's not. The check is payable immediately on demand without any days of grace. बुझी पारछो days of grace अथरे available हबनी आगे, but bill of exchange जो तमे पढ़थिबो कोन grace period तुमको मिलुछ केते दिन मिलुछ very good 3 days मिलुछ, but check रे सेमती मिलबन. बुझी पाला हां तमे भी very good. Promissory check is not crossed, check can be crossed. It's a very important point. Promissory note ta cross ही परिबनी, check ta cross ही परिबो. Crossing of the check रो meaning कोन anyone? Crossing of the check रो meaning, crossing of the check रो माने cross करे. Okay, fine. Straight answer एटा ठीक अछि. Crossing of the check रो meaning second point. Pencil रे cross ही पारे नाले pen रे cross ही पारे. Great. तापर पर्सन क्रॉस करि परियो नाले दिजण पर्सन ओके नै क्रॉसिंग रो मीनिंग होछि यू आर मेकिंग इट समवॉट इनवैलिड देयर बुझी पारछ बट प्रॉमिसरी नोट रे से क्रॉसिंग रो फेनोमेनन नाही. नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू द पेई, नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू द पेई. तो प्रॉमिस करथिलो ना मते कोन पे तू भांगिलु कहले से टिके हम भांगिल तो भांगिली कोई ये टिके कान दियो, बट एडी कोन स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन इज अवेलेबल. स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन माने कोन लीगल सपोर्ट, legal support. Statutory protection माने कौन legal support. Clear? A promissory note cannot be self drawn. Self drawn ही परिबोनी बुझी पालो ना, बट एडी कौन self drawn और bearer check माने तमे जदि निजे निजे पे हेले जाई कि ड्रॉ करि परिबो चेक टा निजे निजे पे मध्ये कौन ड्रॉ करि परिबो चेक. No criminal liability shall be imposed. Criminal liability shall be imposed. This point is somewhat related to this point. Which no criminal liability. Criminal liability. Stamp is necessary. Stamp is not necessary. एडी तो हमरा digital signature and truncated procedure रे थाउ छी stamp कोन पे मारे हैला. Stamp is a very normal thing. Limitation देखो एडा बहुत important. Limitation होची एडी 3 years. Limitation होची 6 months. It would be better जदि तमे पाखरे लिखि दबो. Limitation जहाँ भी अच्छी चेक रो केते 6 months, बट आरो केते प्रॉमिसरी नोट रो आ तमे कंफ्यूज होबा दरकार नै कोडा 6 months कोडा 3 years काहे गेले जेतडो को हम लीगल पर्सपेक्टिव रो देखु छु तो सेटा बेसी पीरियड ऑफ टाइम पे रहिबोनी तुमको माने डबल इंपैक्ट पड़िबो सेडी, बट कम पीरियड ऑफ टाइम पे अगर रहबो 6 months पे अगर रहबो 1 year पे रहबो तुम 3 years 5 years जेडा थी कोसला नॉन लीगल अगर हेतु सबले मन रख फाइनल रे मध्य मन रख पारियो एडा. देन देखो एथरे देखो ड्रॉयर ड्रॉई पे एथरे भी सेडा आगा अछि, तो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस एक्चुअली बट कंपैरिजन जहां भी हैला. बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट क्रॉस, चेक्स में भी क्रॉस्ड. बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्रॉस हे परिबन. Generally 3 days of grace are given. 3 days of grace are given, but edi kono immediate payment is required, no grace days are allowed. Anybody including the banker acha edi put point achi. However, this convenience is not allowed in case of bill of exchange payable on demand. Very important point. मोर एक टेंडेंसी अछि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है मो बहुत इंपोर्टेंट भाबी कि मिस कर देथि अछि हैला. एक्स्ट्रा प्रायोरिटी देकी मैं भूली एथा अछि डिस्कस करिया. तो एडी से कोन कोस देखो बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड. बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड को केबे भी ग्रेस पीरियड हबनी काहेकि सेटा लेखा है इसका ऊपर डिमांड आदि करी. अच्छा इंस्टीट्यूट रे भी गुटे बुद्धि अछि कोन जो जिनसला पूरा पूरी एक्सक्लूसिव हेथिबो से जिनस ऊपर तारो माइंड पड़े. जेमिति कि गुटे भूत फिल्म देखिला अलगा हम देखिबा गुटे फैमिली थिबो जोडा पे कि ताको पूरा फर्स्ट हाफ रे पूरा 1.5 आवर मना कराइथिबो से इंटरवल पर से घर गागा जेबो सिमिति आगा हम इंस्टीट्यूट कोन एडा पूरा पूरी एक्सप्लोर करा हेछि. तो ए पर्टिकुलर पॉइंट आगा से पछरे तो कोन बिल ऑफ एक्सचेंज payable on demand. Bill of exchange payable on demand will never be granted with any grace period. किछि भी grace period ताको नै. It's as similar as check. जदी इंस्टीट्यूट बेसी चालाक हेगिरे
तुमको पचारे कि बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड एंड चेक रो डिफरेंस टा को तो ऑल अदर पॉइंट्स विल रिमेन द सेम बाकी सब पॉइंट सेम रहबो से खाली गुटे पॉइंट एका तुम मिस करि पार क्लियर सेक्शन नंबर भी तो चेंज होबनी बुझला एनीबॉडी इंक्लूडिंग द बैंकर मे बी अ ड्रॉई इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बैंकर भी ड्रॉई हे पारियो बट एडी कोन ड्रॉई इज ऑलवेज अ बेकर वाओ बैंकर तको केक मन पड़ला ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंकर एडी बैंकर ही पारिबो बट एडी बैंकर आगा हबो बुझछ ना ओडिया ग्रामर से खोजना कोन it must be accepted before the acceptor can be made liable upon it से कोन कोच दे माने से कोच की acceptor टा हां मारला पर आगा से acceptance ही चली कहिया भाबे माने अल्टीमेटली से कोन कोच जते जैसे हां मारी आनी सेते जे एक्सेप्ट हबनी कहि तर गुटा अलग तरीका सेडा कहया ठीक है स्टाइलिश वे ऑफ टेलिंग दिस it requires immediate payment it does not require acceptance of the maker thus the question of the acceptance does not arise in the case of check please underline acceptance does not arise in case of check check रे एमती नाही कि acceptance हेबार अछि कहि किछि अछि बट एडी कोन acceptance is mandatory एडी लिखि पारिया कोन acceptance is mandatory where a bill of exchange is not paid and not honored a notice of dishonor should be sent to the drawer to charge him notice of dishonor ता कागु सेंड हबो ना ड्रॉयर को सेंड हबो कोन पे से जिंसडा करेक्ट करिया बुझि पालो बट एडी देखो केते इंपोर्टेंट पॉइंट छडा जदि डिसऑनर भी ही जो इट्स नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी इमति नै कि सेटा स्ट्रिक्टली नेसेसरी कि से ताको किछि नोटिस पठेबो कहली कोन पय नै काहे कि चेक बाउंस केस ता बहुत आड बेसिस स्ट्रिक्ट जिंसडा तो नोटिस पठे किछि दरकार नै से ऑटोमेटिकली जानछि consequences कोन ही पारे the banker can return the check with a memo or refer to the drawer which is a sufficient notice are sufficient notice कोन refer to the drawer ताको जेकी पचर से डायरेक्टली कहि AD से directly coach statutory protection is not available but AD it affords protection to the banker. Again same point repeat करछे AD. Civil liability in case of dishonor of bill of exchange. AD criminal liability. एटा भी गोटे important point. देखो ए दिरा distinction बहुत important अछि तम पई. हला exam perspective रे very important. काहे कि एडी हमु तीनटा अलगा point दिसला. Limitation गोटे लिमिटेशन गोटे आ कोन स्टैंप रो गोटे आ गोटे कोन थिला क्रॉसिंग ऑफ चेक सुन छता आईडी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन ना कहिथिली सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी कहिथिली आ गोटे कोन कहिथिली एक्सेप्टेंस पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट देखो the transaction of the instrument requires at least two persons dida persons doctor one is the drawer and the other is the drawee the drawer of the instrument is the person who makes the bill of exchange or a check and the person thereby directed to pay is called the drawee I already discussed karchu drawee is the person to whom we are directing to pay but drawer ke instrument is the person who makes the bill of exchange jege draw karch Tapare, it was held that the definition of the drawer is not exhaustive. The maker of the promissory note can also be a drawer. So, it underline karo. The maker of the promissory note can also be a drawer. এটা হচ্ছে একটা past exam question. The maker of the promissory note can also be called as a drawer. Drawer in case of need mane kon. When in the bill or in endorsement thereof, the name of any person is given in addition to the drawee. Please underline in addition to the drawee. माने आमको जेतळे गुटे पर्टिकुलर फॉर्म फिल अप करिया कोचंदी सेथरे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मागुचंदी सिनियडी कोन अल्टरनेट पर्सन रेस्पोंसिबल पर्सन से मागुच से कोन कोची से मानो आमे कोच ड्रॉयर इन केस ऑफ नीड तो एनी पर्सन इज गिवन इन द एडिशन टू द ड्रॉई to be resorted to in case of need such a person is called as drawee in case of need देखिलो सेकेंड मीनिंग द बुले देला एटा होची drawee in case of need drawee in case of need माने कोन गुटे पर्सन को अप्रोच करियार थिला से पर्सन जदी अनअवेलेबल ही जाउची तो who is the immediate person whom we can consult से पर्सन को हमें कोन कहया drawee in case of need clear as simple as that acceptor माने कोन after the drawee of a bill has signed his assent upon the bill
or if there are more parts thereof than one upon one such parts and delivered the same or given notice of such signing to the holder or to some person on his behalf, he is called as acceptor. माने कौन कौचे सी कौन मीनिंग कहला एथिरे अल्टीमेटली जेतेबेले गोटे प्रोसेस टा चलछ एंडोर्समेंट हे पारियो डायरेक्ट डिलीवरी हे पारियो किछि भी हे पारियो तो फॉर द टाइम बीइंग जदी गोटे पर्सन कैरी करछि किबा गोटे पर्सन एक्सेप्ट करछि किबा गोटे पर्सन कोन रेस्पोंसिबिलिटी नउछ ताड बिल रो तो से कोन कहि पारि हम तक एक्सेप्टर कहि पारि दिस इज एज पर द एक्ट अगेन मु कोच एज पर द एक्ट रो मीनिंग अलगा थाउछि सेडार मीनिंग अलगा थाउछि दीडा जब क्लियर कंपैरिजन हमको दरकार से केली कहछि देखो आफ्टर द ड्रॉई ऑफ विल हैज साइन हिज एसेंट एडा केबे हे पारे जतलो को ड्रॉई तार सिग्नेचर कहथो माने कोन मु एडा को कंपेल होछि or if there are more parts thereof then one upon one such parts and deliver the same जदि गुटे नोटिस सब किछि साइन हेनी there are different parts of the signature बुझला गुटे हेवी अमाउंट जतले हम डील करछु तो गुटे पर्टिकुलर नोटिस सब जिंस हबनी there are one upon other parts or given notice of such signing to the holder किछि होल्डर को गुटे नोटिस देला or to some other person on his behalf आउ का गुटे नोटिस देछि कोन देछि ना के कोन हैंडल करिवो such person is called as an acceptor तो responsible person ultimately के responsibility नोछि गुटे पर्टिकुलर अमाउंट डील करला आलगो से पर्टिकुलर पर्सन को हमें कहया कोन acceptor बुझिला acceptor for honor माने कोन it's somewhat similar to drawing in case of need बुझि पाछो when a bill of exchange has been noted or protested for non acceptance or for better security से कौन कोची नोट करछंदी प्रोटेस्ट करछंदी किबा कहछंदी we need more security then कोन हबो any person accepts it supra protest माने मते गुटे एडा गुटे सर्फ पैकेट रो नाळे लाउछ supra protest for honor of the drawer or any one of the endorsers such person is called as acceptor for honor बुझि पाला ना नहीं तो एडा ए लोक हमें कहछु कोन acceptor for honor clear acceptor for honor तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन पे जे भी रहू चंदी मजरे से लोक हमें कह कोन एक्सेप्टर फॉर ऑनर पेई तमे जानचो टू होम और टू हुज ऑर्डर द मनी इज बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी पेड बुझि पाला होल्डर माने पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन देयर ऑफ जे भी से चेक टा होल्ड करछि कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टा होल्ड करछि इथरे खाली कोन दरकार सेटा अंडरलाइन करो बाकी सब जिंस इररिलेवेंट इते जे देखो it was held that the term holder as defined in section 8 of the act would not include a person who though in possession of the instrument had no right to recover the amount due from the parties thereof such as the finder of a lost instrument payable to bearer or theft in possession माने से गुटे जिंस कोछि देखो होल्डर रे फाइंडर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आसीबोनी कोर्ट एटा डिसीजन नेला कि होल्डर does not include finder of the negotiable instrument clear तापर देखो से कहिछि होल्डर इन पोजीशन ऑफ द promissory note but claim to recover the debt on basis of a succession certificate माने कोन तार लीगल हेयर जतो गोटे लीगल हेयर थाउछ गोटे पर्सन रो डेथ हेला अचानक तार लीगल हेयर जे भी अछि सी रिस्पांसिबिलिटी नोछि गोटे जिंस रिकवर करिया पई देन तार सक्सेशन सर्टिफिकेट माने लीगल हेयर सर्टिफिकेट थिले वी कैन कंसीडर इट टू बी वैलिड एडा भी गोटे कोर्ट रो डिसीजन तो फर्स्ट केस रो डिसीजन कोन थिला होल्डर डज नॉट इंक्लूड फाइंडर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जाउ जदी रोड पर किछि मिलेला तो सी किछि भी ड्रॉ करि परिबोनी सेकंड थिंग कोन a legal heir can claim the debt only if he has the succession certificate clear
बुझिला होल्डर रो मीनिंग होल्डर इन ड्यू कोर्स रो गुटे पॉइंट अंडरलाइन करो It means any person who for consideration becomes the possessor of the promissory note. Consideration पे से possessor हबो माने से किछि consideration देछि कि तू handle करे सेते जाई से जिंसडा से जो negotiable instrument तू handle करे सेते जाई कहगी जदी से किछि देछि interference माने consideration देगी ताको interfere करैछि सो से particular person को हमें कोन कहे holder in due course. तो एडी कौन हबो the payee or the endorsee thereof if payable to the order before the amount mentioned in it become payable and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title. तो ए पॉइंट भितर खाली से कंसीडरेशन पे एक्वायर होइछ कंसीडरेशन पे इंटरफेयर होइछ से गुटे पॉइंट इंपोर्टेंट आ बाकी सब पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करें. क्लियर? थैंक यू.